Hi students, welcome to virtual class of Municipal Corporation of Greater Mumbai. I am Sri Kumar. The class is for 8th standard students. Subject is mathematics. We are continuing with the number system in that you are learning about rational and irrational numbers again in the first chapter. In fact, in this video you will be learning about irrational numbers where we will be reaching to understanding what are really irrational numbers as well as how to construct irrational number or how to mark irrational number on a number line. After all, if we are thorough with the different types of numbers, our mathematics will go smoothly, understanding of mathematics will go smoothly, and that is the purpose of making you understand irrational numbers. So my dear students, please take interest to know more about number system. Decimal form of rational numbers. Rational numbers can be represented in decimal form. That is the topic. Rational numbers can be represented in the form of decimal numbers. How can we represent it in the form of decimal numbers? We can represent it. Rational numbers are those numbers which can be represented in what we say P upon Q form. That is known to you now. We are familiar with it, right? P upon Q form we can represent, right? So in that case we know about rational numbers P upon Q form. If you ask simply a rational number, we know that now 10 is a rational number because 10 can be represented as 10 upon 1, right? 15 upon 3 is also a rational number. Now, considering representing rational number in decimal form, that means we have to represent 15 upon 3. If we are trying to represent, it will be represented as 5 after division. But if I am trying to represent 10 upon 3, how will I represent 10 upon 3? Then I have to divide 10 by 3. 10 divided by 3. When I divide 10 with 3, what will happen? 3 3s are 9. Then balance 1 decimal point. 10, 3, 9. Again 1 balance 3. And we know that it will go like this. So we can represent 10 upon 3 in such a way that 3.3333 ऐसा जाएगा. Correct? We say that the decimal number is recurring one. For our convenience, what we do is we will write 3.3 and a dot on its top, which tells us that it is recurring. Repeat होता है. Repeat होने को बोलते हैं recurring. But there are certain situations where if I think about, I will take a new page for that. Go to a fresh page. If I think about dividing 1 divided by 7, ऐसा भी एक situation हो सकता है. We are talking about rational numbers in decimal form. So I have to divide 1 with 7. 7 में तो डिवाइड ही नहीं होगा, तो मुझे डेसिमल से स्टार्ट करना पड़ेगा. पॉइंट डाल दिया, इधर 10 डाला, 1 7s are 7, balance 3, 30, 4 7s are 28, balance 2, then 20, then I will get 2 7s are 14, correct? Then I will go ahead, balance is 6, it becomes 60, then I will write 8, डिजिटल पेन इसलिए ऐसा होता है, 56, वापस 4, ये खत्म नहीं होएगा लगता है, 40, that means 7 7s are
नहीं चलेगा, 5 7s are 35, तो ये ऐसे ही चलते जाएगा। 50 मीन्स अगेन आई हैव राइट 7 7s are 49, तो ये तो ख़त्म ही नहीं होता, ख़त्म पहले भी नहीं हुआ था 10/3 के केस में भी नहीं। लेकिन इसमें क्या पेक्यूलियरिटी है, इसमें ऐसा भी एक पेक्यूलियरिटी है कि ये जो रिपीट भी नहीं हो रहा है, देखा, सब अलग अलग नंबर है, 1 4 2 8 5, अभी मुझे मालूम है इसके बाद 7 आएगा, 7 7s are 49. So here the peculiarity is that no number is recurring, that means not recurring, recurring मतलब वापस repeat नहीं हो रहा है, not repeating, and it is not terminating also, खत्म भी नहीं हो रहा है, terminate means खत्म हो रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस इसलिए हो गया, उधर ट्रेन खत्म होता है, स्टॉप होता है। So we found that there are numbers which are terminating, like in the case of 15/3, here it is terminating. There are numbers which are recurring. Recurring means repeating, that is why we put this is a recurring decimal, recurring, reoccur, इसमें से ये word आया recurring. Recurring means repeat होता है. There are numbers which are recurring, but there are numbers neither recurring not terminating. तो नंबर सिस्टम में ये सब घुस के आ गया। सो डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके टेक्स्ट बुक देखिए तो किधर है आपका टेक्स्ट बुक, ये आपका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, इसमें क्या हो रहा है, हियर यू कैन सी दैट, लुक एट दिस रिकरिंग, इसमें 6 रिकर होने वाला है, इसमें 3 रिकर होने वाला है, इसमें 1 4 2 8 5 7 रिकर होने वाला है। So these are numbers which will recur, and we classify them as rational numbers. But the other type of number, just now we saw this kind of numbers, 1/7, we call it as irrational numbers. What is it? Irrational numbers. Then what are irrational numbers? We are having list of numbers now in front of us. We began with the numbers which are named as natural number, that was the beginning. Then we had whole numbers, then we had integers, हम सोचा काम हो गया, sorry, spelling mistake, integers. Then we came to know about the last learned rational numbers. अभी आ गया न्यू कैटेगरी irrational number, जो हमको irrational numbers which cannot be convert, when we convert them into decimal में convert करने के time, these numbers are non terminating and non repeating or recurring. ये आपको ध्यान में रखना है। All those numbers which are not having a perfect root, like √2, √3, √7, इसका सब रूट फाइंड आउट करने को जाएगा तो आपको you will get this newly introduced number which is named as irrational numbers. Okay, so please remember that irrational numbers is a new introduction, and your textbook is talking about irrational numbers next, and the first irrational number taken into explanation is √2. √2 के बारे में explanation आ रहा है। √2 का वैल्यू है अपने हिसाब से 1. √2 अगर सच्ची में डिवाइड करने जाएगा तो ये तो मालूम पड़ा हुआ नॉन रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ऐसा है कि मैं आपके लिए बताता हूँ, √2 अगर मेजर करने जाएगा तो 1.4142135623 करके ऐसे निकल जाएगा। तो नॉर्मली हम 1.41 लेके ख़त्म करते हैं, मतलब √2 का वैल्यू रहेगा 1 और 2 के बीच में 1.4142, बट
नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग होने की वजह से हम ड्रॉ कैसे करेंगे या इसे कैसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे, तो आपका टेक्स्ट बुक में नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। इरेशनल नंबर्स हैं, आप उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बट हियर इट इज अबाउट रिप्रेजेंटिंग इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन. Okay, myself also will try to show you how it is represented on a number line. Please wait. Okay, I need to take the tools and all and show you. So my dear students, I am going to represent the root 2 on number line. Root 2 का value आपको अंदाज तो मालूम है, root 2 is equal to almost 1.41. That is what we write. We normally say that root 2 is equal to, let me write over here, it will be good for you. Root 2 is equal to 1.41, ऐसे चलते जाते हैं. इसका मतलब क्या है? 4 1 4 2, अगर रियली कैलकुलेट करेगा तो 1 3 5 6 2 3 ऐसा जाएगा वो. इसका मतलब नंबर लाइन में 1 और 2 के बीच में है, तो उधर है ये नंबर. तो ये रूट 2 कैसे ड्रॉ करेंगे या रूट 2 कैसे अपने नंबर लाइन में फिक्स करेंगे? फॉर दैट फर्स्ट वी नीड ए नंबर लाइन. लेट मी ड्रॉ ए नंबर लाइन फॉर यू. टू ड्रॉ ए नंबर लाइन I need a line first. Let this be the number line for me. और ये लाइन बनने के लिए मुझे फॉर्मेलिटी कंप्लीट करना पड़ेगा. इधर एक एरो टिप चाहिए, इधर एक एरो टिप चाहिए, तो लाइन हो गया. अभी नंबर लाइन होने के लिए आई नीड टू हैव मेजरमेंट ऑन दैट. मेजरमेंट इन द सेंस दैट स्केल ऑन दैट. चलो यही स्केल यूज करता हूँ थोड़ा. तो मैं इधर से थोड़ा नंबरिंग करने जा रहा हूँ फॉर योर कन्वीनियंस एंड अंडरस्टैंडिंग. थोड़ा नीचे वाला बड़ा नंबर ले लेता हूँ ताकि आपको देख सके. एंड आई एम गोइंग टू मार्क इट. हाउ कैन आई मार्क इट? आई विल मार्क इट विथ दिस. लेट दिस बी द 0. कलर चेंज इज गुड so that आपको देख सकते हैं. थोड़ा बड़ा ही डाल देता हूँ. 0 1 2 इसे जाने दो. 1 2 इधर तो 3 का चांस. ठीक है. So we have marked the numbers on number line. If you want, you can really write it here. 0 over here. This is 1, this is 2. अपना 2 इसके बीच में आना मांगता है. root 2. This is -1. This is -2. Correct? We have reached to this level. Now the plan is to show root 2 on number line. To show root 2 on number line, we have taken 1 2 3 a specific distance. ना सेंटीमीटर या मीटर, इसको यूनिट डिस्टेंस बोल सकते हैं. एंड मार्क दिस एज 1 यूनिट. मैं इसको 1 यूनिट मार्क करने जा रहा हूँ. थोड़ा कलर चेंज. दिस इज 1 यूनिट. 1 यूनिट. सेंटीमीटर मीटर नहीं. Now what I have to do is look at your textbook. It is taken 1 unit. Now the same way I have to, steps are there to do 1 unit. Look at here. I will take AP also. I have to take 1 unit. For that I should draw a perpendicular at A. What is A here? A unit over here. So let me do that. I am going to take this
ruler and draw a perpendicular here. To draw a perpendicular, actually you need to have compass and ruler, but to explain you I am using this ruler and drawing a line, vertical line. Okay, let it. This is the perpendicular drawn by hand temporarily. Now take 1 unit on that also. So with the help of the scale I can mark 1 unit. To mark 1 unit, again comparatively little bigger. This is 1 unit marked, and as per the textbook I will be marking, because you can watch the video again and again and get that how it is done. So at that time there should not be confusion in you. So this is sender O, this is, let me mark this one as A here, and this point, which is as in textbook, I am marking for your convenience. P it is, P is marked, any letter you can use, and this 0 has been 0 only. At the same time 0 is also marked as O. So O, A, P are marked. If this is 1 unit, this is also 1 unit, correct? This is also 1 unit in length. Now the interesting thing is coming here. Now comes something interesting. Both OA and AP are 1 unit, and as you know, this is perpendicular here, because we have done like that. This is perpendicular drawn through A. You can use compass and ruler for that purpose. Now we know about Pythagoras theorem, that this be a right angled triangle. A right angled triangle, right angled here. Now this is 1 unit, means I am marking the same over here. Marking the same over here in the sense that marking O here, A here, P here, 1 unit here. This is 1. Same way 1 unit here also. Right? Now by applying Pythagoras theorem, which tells that the side opposite to the right angle, which is named as hypotenuse, hypotenuse square is equal to 1 side square, in this case OA square, plus other side square. Other side square. This you have studied in 6th standard. That means you will be having hypotenuse square. This is hypotenuse square is equal to 1 square plus 1 square, which is equal to 1 plus 1, which is equal to 2. हमको क्या मिला? H square is equal to 2. H is equal to root 2. Correct? H is equal to root 2 मिल गया हमको. तो हमको इधर लिखना पड़ेगा ना, ये रूट 2 है, मतलब OP is equal to root 2. अगर वो रूट 2 है, OP रूट 2 है, तो फिर ये OP कितना होगा? वो भी रूट 2 होगा, क्योंकि this is 1 unit and this is also 1 unit. This is 1 unit, this is 1 unit. So this became root 2 measurement now. What is root 2? OP is root 2.
ओपी अगर रूट टू लेंथ में है, मतलब 1.4 1 2 1 3 5 6 2 3 जो बताते हैं वो है वो, तो देन आई कैन शो दैट ऑन नंबर लाइन। लास्ट स्टेज में आ गया, कॉम्बस लेके आएंगे मैं, एंड कॉम्बस को एडजस्ट करेंगे, अपना साइज एक्सपेंशन एडजस्ट करेंगे, इधर लेके आएंगे, हमको रूट टू मिल गया है, आई एम हैप्पी। तो फिर उसको इधर रखेंगे, लेंथ के हिसाब रूट टू बराबर रखेंगे, सॉरी बराबर उसका मेजरमेंट में रखेंगे, देखता हूँ बराबर रखने को ना मांगता है अपना डिजिटल कॉम्बस, राइट, आ गया रूट टू लेंथ। ये जो कॉम्बस का एक्सपेंशन है दैट इज इक्वल टू रूट टू नाउ, बिकॉज इट इज रूट टू यूनिट। अगर ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है तो रूट टू सेंटीमीटर, ये अगर 1 मीटर 1 मीटर तो ये रूट मीटर, इसलिए रूट टू का यूनिट में डाल दिया। Now that is the length of root 2, then I will take that here to show you clearly. I will change the color into something different, blue, let it be. Then I will just simply shift this जो मैंने लिख के रखा था उसको मैं हटा दूंगा, ओके, ये सिर्फ डिजिटल में। Then now I will mark root 2 on number line. Very good. I marked root 2 on number line. मेरा कॉम्बस का काम हो गया। So root 2 is marked on number line. This length is equal to root 2. This is equal to root 2 from O to A. That length is equal to root 2. वो length अभी root 2 है. So I marked root 2 on number line. And I will write here root 2. So understood? And your textbook is talking more about drawing on number line. Your exercise is to draw root 3 on number line. Look here. Steps are given. You will solve it. आराम से समझ के रूट 3 कैसे ड्रॉ करना है, उसके बाद रूट 5 कैसे ड्रॉ करना है, रूट 7 कैसे ड्रॉ करना है। जैसे टाइम मिलते है आपको मैं इसका सब वीडियो डाल देंगे, एक एक नंबर का डाल देंगे, कैसे रूट 2 ड्रॉ करना है, कैसे रूट 5 ड्रॉ करना है, रूट 7 ड्रॉ करना है। Dear students, the topic was related to rational numbers and irrational numbers. Irrational numbers are those numbers which are non-terminating and non-recurring. ये आपको याद रखना है. That is the most important thing you studied today. Non-recurring, non-terminating numbers are called irrational numbers. And you also came to know about irrational numbers are very special, terminate भी नहीं होते हैं, recur भी नहीं होता है, ऐसा भी numbers है। So anyway number line का study इधर खत्म हो रहा है। फर्स्ट स्टैंडर्ड से शुरू किया था नंबर के बारे में, नेचुरल नंबर्स, देन होल नंबर्स, देन इंटीजर्स इन 6th स्टैंडर्ड, रैशनल नंबर्स इन 7th स्टैंडर्ड, इरेशनल नंबर्स इन 8th स्टैंडर्ड। अब तो बहुत बड़ा हो गया अभी नंबर लाइन खाली, नो मोर नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर जो जो पॉइंट है हर एक पॉइंट को आपने डिफाइन किया। So my dear student, I am closing this video for here and thank you. Okay.